Sir, exams ended today, so can I give the test tomorrow? But I'll be discussing the paper today, beta. So do one thing. We'll have the next test hoga, give that test. Okay. And you try to solve the problem today in the classroom. Chalo, go and discuss it. We'll start with the first problem. The frequency of vibration m suspended from the spring of spring constant k is given by f is equal to cm raised to power x k raised to power y, where c is a dimensionless constant. The value of x and y is. How to solve this? हमें क्वेश्चन में दिया है that frequency is c m raised to power x and k raised to power y. Where c is a dimensionless number, so c does not have any kind of dimensions. तो आपसे पूछा गया कि find out the values of x and y. Find value of x and y. It's a good question, easy, but see, on left hand side we had frequency. Now what is frequency? 1 by time period. So the dimension of frequency will be equal to what? m0 l0 t of minus 1. Okay, am I audible? Okay, am I audible? Disha, can you hear me, beta? आवाज आ रहा है? Awesome. Okay, I've lost power actually. So frequency we had c into m raised to power x and k raised to y. So we have to get the values of this x and y here, and they have said that k is a spring constant. So आपसे क्वेश्चन में पूछा गया find value of x and y. Now what is frequency? This is 1 by time period. So therefore, if I write the dimension of frequency, this is m0 l0 t minus 1. Here we have mass cut down. What is mass, by the way? If you write the dimension of mass, कितना हो जाएगा? m1 l0 t0. Correct? The dimension of mass. Is it clear? Now see, once we have this, what will be the dimension of spring constant k? कैसे निकालोगे? F is equal to kx. So k कितना हो जाएगा? Spring constant f by x length. Sir, I just came back from my class. Can you please give a recap of what? Sorry, I can't hear. Repeat again. Sir, my class, another class just got over. So I joined later. Can you please give a recap? No, just we have started. We are discussing the test which we have done. Huh? So see test ko discuss karen. We are on the first question of that. Okay. So we have a frequency is given as c m raised to power x k raised to power y. So we'll write down the dimensions. So left hand side we had frequency. Frequency is 1 by time period. So the dimension of frequency is m0 l0 t minus 1. This is mass here.
So dimension of mass will be m1 L0 T0, and then this is K, which stands for spring constant. So K का dimension लिखेंगे. We had formula F is equal to Kx. So K will be F by X. Force का dimension I know is m1 L1 T minus X is length. So by solving this, we got the dimension m1 L0 T of minus 2. Right? So we'll plug the dimensions here. हमारे पास relation था C m raised to power x, a raised to power y. So if I place the dimension of frequency, that is m0 L0 T of minus 1, m1 L0 T0 raised to power x, and there we have k m1 L0 T of minus 2 raised to power y. So if we rewrite this m0 L0 T of minus 1, this is C, m raised to power x L0 T of 0 L0 T of minus 2y. So if we further solve it, हमें क्या result में मिलेगा? That m0 L0 T of minus 1 C m raised to power x plus of y L0 and T raised to power minus of 2y. याद करो, I have given you a concept कि if the formula is dimensionally correct, in that case, dimension on left hand side will be same as the dimension on right hand side. So checking for dimension. So can I say that x plus y will be equal to 0? And because x mass ka dimension here, x plus y here mass ka dimension here 0. So if I compare this, I can say x plus y is equal to 0. And if I compare the dimension of time, here we had minus 1, here we had minus 2y. Minus 1, so this minus and minus will get cancelled. So y I am having here is 1 by 2. Now x plus of 1 by 2 is equal to 0. That implies x will be minus of 1 by 2. So this is the answer. So we had answer x as minus 1 by 2 and y as 1 by 2. Okay. नाइसा, आपको आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? हाँ sir. So we can do it by the formula also. Yeah, we can do it by formulas. But my suggestion will be na कि for this type of problems, it is better to go by the concept of dimension. This will help you to solve a complex problem also. Okay. Clear, everyone? So how do we know that we have to use dimension? How do we know? How do we know when we have to use dimension? No, whenever there is a question like this, na, you have to find the values of x and y, or if we have to get the relation between any two physical quantities, in that case we have to apply dimension. Okay, जब भी आपको किसी भी physical quantities के बीच में relation बैठाना होगा, and when we have to find out the values of some powers, तो उस case में we have to use the concept of dimensional analysis. Clear, Ankita? Yes. Fine. So let's move forward. शुभम, तुम्हारा आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? This question was asked in BITSAT. BITSAT मतलब बिट्स प्लानिंग का जो एग्जामिनेशन होता है. So question was asked in BITSAT 2006. Okay, I have not given the test. No problem. ठीक, we'll move forward. So the correct answer for this question is option number B, and the B is minus 1 by 2x and plus 1 by 2y. Good. Let's go forward. Next question is, if E is equal to energy, G is gravitational constant, I is impulse, M is mass, then the dimension of G I M square by E square are same as. Bharati Vidyapeeth, and this is one of the engineering examinations उसमें पूछा है. So let me go with the question. हमें दिया है क्वेश्चन में कि E एनर्जी के लिए स्टार्ट करता है. Okay, what is the dimension of energy, by the way? This is M1 L2
T of -2. This is the dimension of energy, right? So the dimension of energy is m1 L2 T of -2. Am I clear? What is the next term here? Is my gravitational constant, capital G. What is the dimension of gravitational constant? Gravitational constant का dimension क्या है? It is itself a good question to get the dimension of gravitational constant. क्या होगा अगर dimension gravitational constant का? F is equal to G m1 into m2 by r square से अगर आप निकालोगे, so this is m1 L2, so gravitational constant हो जाएगा F into r square by m1 into m2. so अगर हम gravitational constant का dimension निकाले, so this is m raised to power -1, this is L3 t raised to power -2. Clear? This is the dimension of gravitational constant. Next is impulse. So I here stand for impulse. Impulse का क्या formula होता है? If we rewrite this, impulse का formula क्या होता है? Rate of change of moment. No, sorry. बोलो, you are doing saying right. Impulse क्या होता है? Impulse is rate of change of linear momentum, or it can be also said as force into time. So either of the two definitions will work. So impulse is force into time, or if you want, you can write it as change of linear momentum. So the dimension of impulse will be m1 L1 t1, exactly the same dimension as we have for linear momentum. Okay, and m is a mass by the way. So m तो mass हो गया, capital M. So इसका dimension हो जाएगा m1 L0 t0. तो आपसे पूछा गया dimension of what? G I m square by E square energy. Okay. इसका dimension पूछा गया. Let me have this as x, just for the simplicity I'll write here. So if we want to get the dimension of this, x is equal to, if we have to get the G का dimension आप पेश कर दो, m minus of 1 L3 t minus of 2, I is impulse, तो the dimension हमें पता है m1 L1 t minus 1, mass का dimension हो जाएगा m raised to power 2, by energy का dimension is m1 L2 t minus 2 का whole square. So if I get the dimension of x here, m plus 1 minus 1, so this will be getting cancelled. So m raised to power 2 will have there in numerator L3 L1 L4 L4 t minus 2 minus 3, so this is t of -3, but in the denominator we have m2 L4 t of -4. So if I solve it, this will go up m0 L0 t1. So the dimension of this is exactly same as the dimension of time, है ना? तो यहाँ से हमें क्या मिला? That dimension of gi by m square over e square is same as dimension of time. देखो टाइम का ही डायमेंशन आ गया ना, m0 L0 t1 is what the dimension of time. तो gi m square by e square का exactly वही डायमेंशन होगा जो डायमेंशन टाइम का होगा. I said you had the answer. Yes. Excellent. कर लिया था खुद से सारा. Yes. Excellent. Very good. It's a good question, huh? No doubt, it's a very good question. Ankita and Shubham, समझ में आया कैलकुलेशन? हाँ सर. Okay. Yes, शुभम sir. आपको समझा कैलकुलेशन? हाँ. Okay. देखो 2 बार पूछा हुआ. इस बार का पेपर मैंने थोड़ा टफ रखा था लास्ट टाइम से. पहला क्वेश्चन वाज ऑफ बिट सेट
The second question is engineering entrance examination. Third भी engineering का. चलो करते इसको. If the velocity v in centimeter per second of a particle is given by v given in terms of t as v is equal to at plus b by t plus of c, then the dimension of a, b and c are. इजी क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम क्लास में भी किया था. सो they have given us velocity as at plus b by t plus of c. Now v here stands for what? Velocity. और ये जो t का टर्म है किसके लिए स्टैंड कर रहा है? टाइम. तो हमें क्या पूछा गया है? Find dimension of a, b and c. So a, b और c का डायमेंशन पूछा गया है. Now we know कि फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा when the dimension on left hand side is same as the dimension on right hand side. तो वो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे. तो रिजल्ट क्या है कि फिजिक्स फॉर्मूला विल बी ओनली वैलिड when the dimension on left hand side is same as the right hand side. तो यहाँ पे right hand side में we had at, यहाँ पे velocity है. So if I rewrite this, dimension of a into dimension of time will be same as the dimension of velocity. Getting the point? Now if we solve this, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Dimension of a is equal to m0 L1 t of minus 1, and this is time in the denominator. So dimension of a will be equal to what? m0 L1 t of minus 2. मतलब L1 t minus 2 is the dimension of a. Simple logic लगाया. अगर फिजिक्स का फॉर्मूला ये डायमेंशनली करेक्ट है, which means the dimension on left hand side will be same as the dimension on right hand side, तो वो यूज किया. एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर आप फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिक्स के फॉर्मूला में अगर आप किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, दे शुड हैव सेम डायमेंशन, है ना. तो फिजिक्स फॉर्मूला में इफ वी आइदर ऐड टू क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज, दे शुड हैव सेम डायमेंशन. तो आप देखो यहाँ पे c को टाइम के साथ ऐड कर रहे हो, तो जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन c का होगा. So the dimension of c will be nothing but m0 L0 t. ये मेरा सेकेंड आंसर आ गया. लास्टली इफ वी वांट टू राइट द डायमेंशन ऑफ b, जैसा मैंने बोला कि अगर हम किसी भी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो दे शुड हैव सेम डायमेंशन. तो जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन at का होगा और वही डायमेंशन इस वाले टर्म का होगा. सो आई कैन से फ्रॉम हियर द डायमेंशन ऑफ b by dimension of time m0 L0 t1 is same as the dimension of velocity, which is m0 L1 t of minus 1. So by solving this, dimension of b is m0 L1 t minus 1. This will shift this side, m0 L0 t1. So if we solve this, तो dimension of b कितना हो जाएगा? m0 L1 t0. Am I clear? अंकिता कैलकुलेशन समझ में आया बेटे? What I have done here? Yeah, sir. Okay, good. शुभम आपको क्लियर है? Yes. Okay, so good question, very good question. नाइस आंसर आया. हाँ आगे बढ़ते हैं. आंसर आ गया था प्रॉपर्ली? नाइस. आपका ए बी सी तीनों का डायमेंशन आ गया था. yes Okay, super. Excellent. So we have done with this question number 3. Now we'll go to question number 4. Kerala CT का question. The dimensional formula of impulse. पीछे जस्ट लिखा मैंने, impulse का वही डायमेंशन होगा जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का होगा, because impulse is change of linear momentum, or we can say impulse is force into time. So the dimension of impulse will be same as the dimension of linear momentum, which is m
1 L 1 T minus 1. So the correct answer is option number A. A is the right answer. Is it clear? Shall I move to the next problem? Question number 5 then. ये तो easy है ना? Impulse पूछ रहा है. Impulse is what? Change in linear momentum. So the impulse will have same dimension as the dimension of linear momentum. Or we have the another formula of impulse which is force into time. So force का dimension लिखो, time का dimension लिखो, दोनों का product ले लो. That will give you the dimension of impulse. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. The internal and external diameter of hollow cylinders are measured with the help of vernier caliper. Their values are 4.23 plus minus of 0.01 centimeter and 3.87 plus minus of 0.01 centimeter respectively. The thickness of the cylinder is. कैसे निकालोगे thickness of the cylinder? Internal and external diameters of the hollow cylinders are measured by using vernier caliper. So diameter external दिया है. वन सेंटीमीटर ये होगा ना एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर. अच्छा इसका अगर आप डिफरेंस लोगे तो विल गेट द रेडियस. सॉरी हाफ लेंगे तो आप देखो ऐसा सिलेंडर था मेरा, ये आपका होगा ना थिकनेस. so, ये इंटरनल रेडियस हो जाएगा और एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा. सो अगर आप एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो सो विल गेट द थिकनेस हियर, है ना. कैसे निकालेंगे? देखो थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल मान. हाँ. सो डायमीटर एक्सटर्नल माइनस डायमीटर इंटरनल by 2. Yes or no? So if I solve this, so we have 4.23 minus of 3.87. This is 0.36 by 2. So 0.18 हो जाएगा thickness. बताओ error क्या होगा? What will be the error in this case? एरर क्या होगा? 0.02. 0.0. एरर्स विल गेट एडेड ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एरर ऐड हो जाएगा. याद है हमने डिस्कस किया था प्लस माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर का. whether you subtract the two quantities or whether you add the two quantities, in that case error will get added. तो आप यहाँ पे चाहे एक्सटर्नल डायमीटर में से इंटरनल डायमीटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी एरर ऐड होगा. So error is 0.01 centimeter in the first case. Second case में मुझे error है 0.01 centimeter. So the error in the thickness will be 0.02 centimeter. Okay. नाइस आंसर आया था इस प्रॉब्लम का. सर एरर को डिवाइड नहीं करते. नहीं समझो बात है. एरर इज इन द इंस्ट्रूमेंट. अगर आप थिकनेस निकाल रहे हो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, बाय द वे अगर मेरा डायमीटर में 0.01 सेंटीमीटर का एरर है तो रेडियस में भी तो 0.01 सेंटीमीटर का एरर होगा, बिकॉज डायमीटर और रेडियस दोनों तो आपने सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है और उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है. So if the error in diameter is of 0.01 centimeter, so therefore the error in radius will be also of 0.01 centimeter. ऐसा नहीं होगा कि 0.01 by 2 हो जाएगा error. It will remain same because diameter and radius both are measured by the same instrument. So therefore उसका least count same. तो least count same है तो error same होगा. Getting the point? So if diameter has the error of 0.01 centimeter,
So therefore, radius will also have the same error, whether it is external or internal. और thickness external minus internal, तो subtraction के केस में भी errors add हो जाते हैं. So that is what we have done here. समझ में आया ऐसा पॉइंट? ये ऐसा नहीं करेंगे कि डायमीटर का जो एरर है उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस का एरर आए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेडियस को और डायमीटर को दोनों को आपने सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है. क्योंकि डायमीटर निकालोगे तो ही रेडियस मेजर होगा. सो अगर मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है तो उसका लीस्ट काउंट सेम. सो एज इट हैज सेम लीस्ट काउंट, देयरफॉर जितना एरर उसने डायमीटर में कमिट किया होगा उतना ही एरर उसने रेडियस में कमिट किया होगा. So if diameter is having the error of 0.01 centimeter, so radius will also have the same error, 0.01 centimeter. Is it clear? Yeah. Okay. Great. चलो आगे बढ़ते. So answer is this P1. चलो आगे बढ़ते. नाइसा, शुभम समझ में आ गया एरर्स में क्या बोला मैंने? नाइसा को तो शुभम एंड अंकिता क्लियर? Yes. Yes. Chalo, question number 6. A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If the force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by a rope on the block is. It's a good question. Okay, so आपने इधर से फोर्स लगा दिया P न्यूटन का and we had a mass of capital M and small m. So क्या लिख सकते हैं हम लोग? The force P is equal to capital M plus small m into what? Acceleration. So acceleration कितना हो जाएगा? P by capital M plus small m. ये मेरा पहले तो acceleration हो गया. इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो एक्सेलरेट करेगा वो P by capital M plus small m से ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा. ना मुझे यहाँ पे पता करना है कि टेंशन कितना, टेंशन होगा उतना ही फोर्स वो रोप लगाएगा ब्लॉक पे. सो वी वांट टू गेट द टेंशन हियर. याद करो मैंने 9th में आपको बताया था कि अगर रोप में मास है और अगर आपको टेंशन चाहिए तो जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए वहां पे रोप को काट दो और एक मासलेस थ्रेड को जोड़ दो. सो वी वांट टू गेट द टेंशन हियर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कर दिया, ऐसे मासलेस एक जोड़ दिया, यहाँ पे टेंशन लगेगा. मैंने बताया था ना कि अगर थ्रेड को मास है और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालना है मतलब टेंशन निकालना है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो जहां पे भी आपको टेंशन निकालना है आप वहां का थ्रेड काट दो और ये अटैच अ मासलेस थ्रेड दे, तो यहाँ पे लगा दिया. अब इस ब्लॉक पे देखिए, इस ब्लॉक पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है. अदर देन दिस टेंशन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो अगर हम ब्लॉक पे लिखे नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, सो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? ओनली इक्वल टू टेंशन, mass into acceleration is equal to what? Tension T here, acceleration we already had, P by, so capital N T, so T कितना हो जाएगा? capital M into P by capital M plus of small m. Is it clear? Nice. Have you got the answer for this question? Yes. Excellent. The point is कि अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर थ्रेड को मास होगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है वहां पे थ्रेड को काट दो और एक मासलेस थ्रेड को अटैच कर दो. दैट्स इट. ये कब करेंगे? व्हेन देयर इज अ मास ऑन द थ्रेड. तो आप थ्रेड को काटो, वहां पे एक मासलेस थ्रेड अटैच कर दो. जो मासलेस थ्रेड पे टेंशन होगा वही वहां का फोर्स होगा.
दैट इज व्हाट वी हैड. शुभम समझ गया कैलकुलेशन? Yes. ओके, चलो मूव फॉरवर्ड. D is the right answer. चलिए question number 7. It's a good question. A man slides down a telegraphic pole with an acceleration equal to 1/4 of the acceleration due to gravity. So man is sliding down on a telegraphic pole with an acceleration equal to 1/4 of the acceleration due to gravity. The frictional force between man and pole is equal to in terms of the weight of the man. अच्छा W के टर्म बताना है. इजी क्वेश्चन है ये भी. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने टैकल किया हुआ है. So we had a pole here like this, और इस पे एक आदमी नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 4 टाइम्स इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. G/4 है. इस पे क्या लगेगा नीचे? पहले तो mg लगेगा जो इसके वेट के बराबर है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन. सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन मैन? नेट फोर्स ऑन मैन कितना होगा? नेट फोर्स ऑन द मैन will it be equal to W minus of friction is equal to ma. M acceleration mg by gravity G/4 और mg is nothing but that is equal to W. So can I say W minus of friction? W minus of W/4. So friction कितना हो जाएगा? 4W minus of W/4. That will give us what? Friction as 3W/4 Newton. आ गया था आंसर? Yes. ओके, गुड, एक्सीलेंट. अंकिता समझा बेटा कैलकुलेशन आपको इसका? हाँ सर. पक्का? कोई डाउट है कैलकुलेशन में? नो सर. अच्छा, पिछले वाले प्रॉब्लम के कैलकुलेशन में कोई डाउट है? लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड, ये वाला. यस अंकिता, ये प्रॉब्लम क्लियर है ना? हाँ. ये से गुड क्वेश्चन है. ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर थ्रेड में मास है एंड इफ यू वांट टू गेट दी टेंशन, क्योंकि टेंशन ही आपका फोर्स होगा, तो जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना है वहां पे थ्रेड को काटो और एक मासलेस थ्रेड को अटैच कर दो. दैट्स इट. चलो आगे चलते हैं. गो टू द नेक्स्ट वन. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन. 8. आया था आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? देखिए 8 में क्या कह रहा है? सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एट द रेस्ट. द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर massless. नाउ द स्ट्रिंग इज कट. द एक्सेलरेशन ऑफ द 2m and m will be. क्या होगा? अच्छे से समझना इसको. यहां से अटैच किया है आपने. ये जो क्वेश्चन लिया मैंने ना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द सिंगेज बुक ऑफ स्टैंडर्ड 12th. बट मेरे पास एक दूसरे बुक में भी था, सो आई हैव टेकन द क्वेश्चन फ्रॉम देयर. यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच के, नॉट स्ट्रिंग हियर. इधर से एक स्प्रिंग अटैच्ड है. along with that we had a block here of mass 2m kg. फिर इसके साथ एक थ्रेड लगा हुआ है and the mass of what? m kg. इसको आपने कट कर लिया, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है. कट करने से पहले देखो, बिफोर कटिंग दिस, कटिंग थ्रेड. सो थ्रेड को काटने से पहले क्या होगा? अगर आप देखो तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx और नीचे 2mg प्लस mg लग रहा है. सो कैन आई से दैट kx इज इक्वल टू 2mg प्लस ऑफ mg हो गया. इसका मतलब kx कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3mg. काटने से पहले 2mg नीचे लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, इसको बैलेंस कौन कर रहा था? स्प्रिंग फोर्स. सो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग वी कैन से
that kx is equal to 2 mg plus mg which is 3 mg. Now just after cutting the strings, तो पहले m kg का बात करते हैं. तो जैसे ही आपने इसको कट कर दिया m kg वाले ब्लॉक, तो जैसे ही आपने m kg वाले ब्लॉक को कट किया, now it has become free to move, और इस पे सिर्फ अब एक ही फोर्स लगेगा which is what, mg, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा. So m into a is equal to mg, so m and m will get cancelled, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये m kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्योंकि जैसे ही आपने इसको कट कर लिया है ना, जैसे ही आपने इसको कट कर लिया, कट करने के बाद इट हैज बिकम फ्री नाउ, और फ्री होने के बाद इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा विच इज माय mg, and because of this mg it will come down and it will have the acceleration of g meter per second square. Getting the point? Got the point? अब 2 mkg वाले ब्लॉक पे देखिए, this is what we had on 2 mkg का ब्लॉक. 2 mkg के ब्लॉक पे नीचे क्या लगेगा, लॉजिकल बात है, इस पे 2 mg नीचे लगेगा, एंड प्लस इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, और तुरंत कट किया आपने, और तो kx किसके बराबर है, 3 mg. सो 2 mkg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इज इट kx माइनस ऑफ 2 mg, so that is we can say 2m into acceleration is equal to 3 mg minus of 2 mg. Now if I solve this, what do we have, 2m into acceleration mg के बराबर हो जाएगा, so therefore acceleration will be equal to g by 2. इसका मतलब क्या है, so acceleration that we got here is g by 2 meter per second square. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, m kg का ब्लॉक नीचे आ जाएगा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये 2m kg का ब्लॉक ऊपर चला जाएगा g by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. इज इट क्लियर? Aisa, do you have the answer? Yes. कर लिया था? एक्सीलेंट. शुभम और अंकिता दोनों को समझ में आया कैलकुलेशन में? Yes. ओके. अंकिता आपको कैलकुलेशन समझा इसका? हाँ. सो गुड क्वेश्चन. हाँ, बहुत, ये सिंगेज बुक में भी ये क्वेश्चन, कभी स्प्रिंग को कट करता है, कभी स्ट्रिंग को कट करता है, ऑल द स्टफ. तो स्ट्रिंग को जैसे ही आपने कट किया, ये तो फ्री हो गया, फ्री फॉल में आ गया नीचे वाला ब्लॉक. अगर नीचे वाला ब्लॉक फ्री फॉल में आ गया, इंप्लाइज इसका एक्सेलरेशन अभी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2 mg इस पे नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 3 mg. So 3 mg is acting upward, 2 mg is acting downward. So net force will be 3 mg minus 2 mg is equal to 2 mg. So it is g by 2. तो जैसे आपने स्ट्रिंग को काटा, ऊपर वाला ब्लॉक g by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर शिफ्ट करेगा, and the lower block will go down with an acceleration of g meter per second square. Getting the point? Okay, fine. आगे बढ़ते हैं. चलो, now we'll go to the next problem. Question number 9. A ball of mass m moves with a velocity speed v and it strikes normal to the wall and reflects back normally. It is found that the contact time is t. Find the force exerted by the ball on the wall. Easy question है. So ऐसे आपका वर्टिकल वॉल है, यहां से एक बॉल गया, m kg है, ऐसे गया ये v मीटर पर सेकेंड से, और टकराने के बाद रिटर्न भी हुआ वो उसी वेलोसिटी से v मीटर पर सेकेंड से. सो लेट मी हैव दिस डायरेक्शन एज प्लस, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस.
आप रिवर्स भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ऐसा कोई रूल नहीं है. So I'm taking this direction as plus, so therefore this direction will be minus. So what will be my final momentum? Because velocity इधर है तो momentum भी इधर ही होगा. मीटर पर सेकेंड. अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकाले तो इस डायरेक्शन में होगा, सो माइनस ऑफ m इंटू वी. सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो आप फोर्स लगाओगे, ये रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सो डेल्टा p बाई टी विल बी, सो फोर्स विल बी माय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम. फोर्स कितना होगा? फाइनल पॉजिटिव है, is the answer. Am I clear? ये तो आ गया. Yes. Okay, good. Easy question है ये तो. Directly this is based on the Newton's law, nothing else. बाकी लोग नहीं जानते. सीता, तुम्हारा हुआ थे प्रॉब्लम्स को? Yeah, sure. Okay, good. समझ गया सबको पॉइंट? ये नाइशा आपका आ गया था आंसर 2mv/t. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll move to the next problem. Question number 10. It's a good question. Question number 10. 10,000 small balls, each of weight 1 gram, strikes on a square centimeter of area. So area दिया 1 centimeter square per second with a velocity of 100 meter per second normal directions and rebounds with the same velocity. The value of pressure on the surface is. Okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगेन इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज. सो हमें दिया है क्वेश्चन में दैट वी हैड 10,000 balls. So we have this much small ball. Now 10,000 small balls है and मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है like this. तो इस पे बॉल्स जा रहे हैं और ऐसे हिट कर रहा है और रिबाउंड भी उसी वेलोसिटी से हो रहा है. ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ 1 centimeter square. So as I have area as 1 centimeter square, so this will be 10 raised to power minus 4 meter square. because सब SI में तो उसको भी SI में करना पड़ेगा और पर सेकंड में इतना हिट कर रहा है. पर सेकंड. मास ऑफ द बॉल दिया ग्राम 1 ग्राम. कितना हो जाएगा? 10 raised to power minus 3 kg. तो पहले तो फोर्स निकाल दो एग्जैक्टली द सेम वे, बट इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी लेना पड़ेगा. सो फोर्स कितना हो जाएगा? इफ आई गेट फ्रॉम हियर, अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो फोर्स कितना मिलेगा हमें? फोर्स विल बी 1000 into 1 into 10 raised to power minus 3 into velocity 100 by time 1. ये होगा ना फोर्स. सो विच मीन्स दैट मेरा फोर्स हो जाएगा 10 raised to power 4 to 10 raised to power 6. So ये हो जाएगा 10 raised to power 3 न्यूटन. Ten raised to power 3 Newton will be this we had. Now हमें ये निकालना है प्रेशर स्क्वायर सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या करोगे आप? फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा, इंटू 2 भी तो होगा ना, 2 mv होता है. So it is 2 mv. We had here in the formula. So it is 2 mv. So 2 will be obviously there.
ओके बाय एरिया, सो प्रेशर हो जाएगा फोर्स 2 into 10⁻³ बाय 10⁻⁻4 दैट एरिया वी हैव written here, क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सो मीटर स्क्वायर में इतना हो जाएगा, दिस विल गो अप. सो फ्रॉम हियर प्रेशर कितना आ गया 2 into 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Am I clear? Yes. Okay. आगे नाइस आया था आंसर आपकी इस प्रॉब्लम में? हाँ ओके. इसी था तुम्हारा? Yes, sir. ओके. अंकिता एंड दिया बोथ ऑफ यू समझा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए इसको? हाँ सर. Yes, sir. गुड. आगे बढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत बार यूज में आया है, तब पूछा गया है जेई में, 2 बार तो मुझे ही याद है. So the correct answer is D of this. Question number 11. देखो करके एक बार सब लोग, जिनका नहीं हुआ है. Okay. So a particle moves in xy plane under the action of a force F, and the values of linear momentum P at a given time is Px2 cos t, Py2 sin t. Then the angle theta made by force and time is. Okay. Angle पूछा है. So हमें linear momentum दिया है along x 2 cos t, along y दिया है 2 of sin t, है ना. सो एक्चुअली मोमेंटम वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये होगा px I कैप py j कैप. So this will be 2 of cos t I cap sin t j cap, है ना. So if we calculate the force from here, dp by dt, this is from the Newton's second law. F vector p कितना हो गया cos t I cap sin t j cap by dt. So if I differentiate this, my force vector will be 2. Cos का differentiation क्या होगा minus of sin t I cap, and the differentiation of sin will be what? Cos t j cap. So what do we have force here? Minus of 2 sin t I cap j cap. Angle हमें पता करना है, so we can get the magnitude also, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली निकल जाएगा. डॉट प्रोडक्ट निकाल दो. F vector dot p vector is magnitude of f into magnitude of p into what? Cos theta. So जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, theta is the angle between force and linear momentum. तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, so I cap will be multiplied by I cap and J cap will get multiplied by J cap. So कितना हो गया 2 2 are 4 minus 4 sin t into cos t and plus 4 sin t into cos t is equal to magnitude of f into magnitude of p into what? Cos theta. ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा. So that implies cos theta we had here is 0. So therefore theta कितना होगा pi by 2 or 90 degree. So which means that the angle between force and linear momentum will be 90 degree in this case. Am I clear with the calculations? ऐसा आंसर आया था आपको इस प्रॉब्लम का? नहीं आया था. Okay. शुभम आपको हुआ था सॉल्व ये? Okay. अभी समझ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? Yes. Okay. सिंपल था, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बाकी कुछ. अंकिता एंड रिया समझ गया कैलकुलेशंस बेटा?
हाँ तो ये आपको किसी तरह आपसे हुआ तो सॉल्व? हाँ सर। ओके गुड, गुड क्वेश्चन, इजी है, अच्छा सवाल। देख लो, कुछ डाउट आएगा तो आगे बढ़ते हैं। इजी था, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, इट वाज इजी क्वेश्चन, होना चाहिए था सॉल्व। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So the answer here is 90 degrees. So D option is right. So next page. Question में क्या करा देखिए. This is a unidirectional force F varies with time as shown in the figure. Acts on a body initially at rest for the shorter time 2t. Then the velocity of the body. Then the velocity acquired by the body is okay. Time t, force दिया, mass m लेना है आपको. So the graph here is like this. Sinusoidal graph है, sine का graph by the way. Here we had force, इस एक्सिस पे टाइम है, टी टी, सॉरी ये टाइम हमारा था। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मास दिया गया, गिवन अस इज व्हाट, m kg। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है। सो फोर्स में अगर हम मास से डिवाइड कर दे तो बाय द वे एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो गया। ये है फोर्स और टाइम का ग्राफ, बस जस्ट वी डिवाइड इट बाय मास, सो वी विल गेट द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं फोर्स पे मास से डिवाइड कर दूं तो विल गेट एक्सेलरेशन, राइट? तो यहाँ जो प्लॉट दिया है मैंने आपको, ये प्लॉट फोर्स और टाइम के बीच का, जस्ट आप इसमें मास से डिवाइड कर दो तो हुआ क्या है, दिस विल बिकम द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। आप मुझे सोच के बताइए, एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? हाँ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ विल गिव अस व्हाट? अनाइसा क्या देगा हमें एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया? Velocity. चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। देखो, बाय द वे ये फोर्स और टाइम का ग्राफ, सॉरी क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम ओनली, बट द ओनली थिंग इज कि जस्ट डिवाइडेड बाय मास, एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शंस वगैरह चेंज करेगा नहीं, बस आप फोर्स पे मास से डिवाइड कर दो तो आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है? और हमें पता है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन and time graph will give change in velocity। अब मुझे आप खुद से जरा बताओ, आपको ये t और 2t के बीच में पूछा गया है, क्योंकि साइनसोइडल ग्राफ है तो सिमेट्रिक होगा। मुझे बताइए कि क्या जितना एरिया A1 पॉजिटिव होगा, क्या एग्जैक्टली उतना ही एरिया A नेगेटिव होगा? बिकॉज हम लोग वेक्टर्स का एरिया निकाल रहे हैं, सो देयरफॉर वी हैव टू टेक द साइंस आल्सो। तो द एरिया A1 जितना प्लस में आएगा, क्या उतना ही एरिया A2 माइनस में आएगा? थिंक बाय सिमेट्री। सो देयरफॉर नेट एरिया अगर आप देखोगे, एरिया नेट अगर आप देखोगे तो जीरो आएगा, इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। आपसे यही तो पूछा गया है। तो इस पूरे इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। एज वी हैव जीरो, देयरफॉर आप
कोई भी वेलोसिटी को अक्वायर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपने वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, मतलब जो वेलोसिटी आपका उधर था वही वेलोसिटी इधर था, सो यू हैव नॉट एक्वायर्ड एनी वेलोसिटी बिटवीन दिस, सो द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब जो वेलोसिटी आपको इस t टाइम पे था, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी इज देयर एट द टाइम t, सो वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब द एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। समझ गया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये ऐसा? और क्यों एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर नहीं किया? बिकॉज हमें पता है कि एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब जितना एरिया प्लस में था एग्जैक्टली उतना ही एरिया माइनस में, सो देयरफॉर नेट एरिया बिकेम 0। अगर नेट एरिया 0 हो गया तो वेलोसिटी का चेंज 0 हो गया, सो इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब आपने t से लेकर 2t के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर नहीं किया है। मेकिंग सेंस? Maisa, what the point? So the velocity acquired between t and 2t will be equal to what? 0. Shubham, समझ गया point बेटा what I'm saying? Yes. Okay. बाकी लोग को समझ में आया? अंकिता and Ishita, is it clear? Yes. Okay. इशिता आपको समझ गया पूरा point? Yes, sir. Okay. Diya, Maisha, both of you clear? Yes, sir. Okay. चलो we'll move forward. So good question है, थोड़ा सोचना है इसमें। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि आपने एक्स्ट्रा वेलोसिटी कुछ और ऐड ऑन नहीं किया है, सो इफ वी आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वेलोसिटी इंप्लाइज कि वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी 0। चलो आगे बढ़ते हैं। द आंसर आपसे वही पूछ रहा है ना, देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडीज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो था वही रहेगा, 0। Okay, next question. Question number 13. Two masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. Then the ratio of their linear momentum is. Okay, equal kinetic energy. So bodies का mass दिया है हमें, are moving with equal energy. Then the ratio of their momentum is. क्या रिलेशन निकालोगे आप? सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। याद करो मैंने बोला था m से डिनोमिनेटर में और m से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम हाफ इंटू p² बाय 2m। यहाँ से हमें मिला p² इज इक्वल टू, आई होप यू रिमेम्बर दिस रिलेशन था हमारा लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो मैंने मास से न्यूमरेटर में और एक मास से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सो वी हैड m² v² व्हिच इज इक्वल टू p², बाय डिनोमिनेटर में विल हैव ट्वाइस ऑफ m। सो इसको अरेंज कर दिया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, सो आई कैन से दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास। तो रेशियो ले लो दोनों का, p1 बाय p2 इज इक्वल टू रूट ओवर m बाय रूट ओवर 4h, तो m and m will get cancel। सो अगर आप रेशियो निकालोगे p1 बाय p2 का 1/2 आएगा, and if I get p1 is to p2 then it will be 1:2। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों बॉडीज इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है,
So their kinetic energies are same. तो रेशियो में उसको लेके फायदा नहीं, क्योंकि सेम ही था, 2 भी कांस्टेंट है. So I had कि linear momentum is directly proportional to root over mass. So रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म कट जाएगा. So P1 is equal to root m by P2 is equal to root of 4m. ऐसे थे कैलकुलेशन. नाइस आंसर आया था इस प्रॉब्लम का. Yes. Okay. Good. Clear है सबको? Shall I move forward? चलो आगे बढ़ते हैं. So we have done with this. Answer is C. 1:2. Go to the next one. अच्छा, ये भी अच्छा सवाल. A satellite in a force-free space sweeps a stationary interplanetary dust at the rate of dm by dt is equal to alpha into m is a mass and v is the velocity of satellite. Alpha is a constant. The d acceleration of the satellite is. ये शायद कभी पहले भी कहा था बट टेस्ट में किया. सो हमें dm by dt दिया है अल्फा into v. अल्फा into v दिया हुआ है. ना याद करो थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला था. दिस इज vr so mass into acceleration v into what do we have, dm by dt. this is v. dm by dt किसके बराबर हो गया, अल्फा into v. so that implies mass into acceleration alpha into v square. ये d acceleration. और obviously d acceleration का बात कर रहा है, so that will be coming in the negative sign. Am I clear? शुभम आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? Yes. Okay. अंकिता clear? Sir. Okay. Aisha, have you got the answer for this question? ये इसका आया था आंसर आपका? Okay. चलो ठीक है, आगे बढ़े. दिया और निशिता, both of you clear? Yes. Okay. So we'll move forward. Go to the next problem. ये क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये इसका आंसर आया ना आयशा तुम्हारा? तो लास्ट प्रॉब्लम में बी था ना ऑप्शन. बी वाज देयर क्या? हाँ बी हो. अच्छा बी दिया ऑप्शन. नहीं बी, इट विल बी. रिटार्डेशन पूछ रहा है ना, बी हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. इसका आंसर आया था 15 का? आयशा इसका आंसर आया था 15 क्वेश्चन नंबर का? No. हाँ सर. कर लिया था? मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर आपसे पूछूंगा लॉजिक. A piece of wire is bent in the shape of parabola y is equal to x square with a bed of mass m on it. So एक bed है, छोटा सा object है. The bed can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point on the parabola when the wire is at rest. The wire now accelerates parallel to x-axis with an acceleration of a. The distance of the new equilibrium position of the bed, where the bed can stay at the rest with respect to the wire from the y-axis is, मतलब x का distance पूछ रहा है. Okay. So we have a parabolic structure. So
So इस तरीके से हमारे पास एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, like this we had here. Okay. Y is equal to k of x square. यहाँ पे एक बॉटम पे वेट रखा था, अभी सडनली क्या हो गया कि एक्सेलरेट करने लगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये एक्सेलरेट करने लगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वेट पीछे कहीं जाएगा। तो मान लो यहाँ पे आके ये रुक गया वेट इसका। अब जब ये यहाँ पे आके रुक गया है तो आपसे पूछ रहा है कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वेट फ्रॉम y एक्सिस। ये x डैश आपको पूछा है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ चलो ठीक है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या लिखना। बोलो नाइशा, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर नहीं, मैंने आई थिंक रैंडम सिलेक्ट कर लिया था ऑप्शन जो करेक्ट है। रैंडम किया है? ओके, नहीं रैंडम नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर मुझे स्लोप चाहिए, सो व्हाट टू डू फॉर स्लोप? शुड आई प्लॉट अ टेंजेंट हियर? Tangent, yes. हाँ, और ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये जो एंगल फॉर्म करेगा, क्या ये थीटा होगा हमारा? Yes. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो नॉर्मल रेक्स इंटरैक्ट हो गया, इस पे mg नीचे लगेगा और इधर एक्सेलरेट करा तो लॉजिकल बात इसके फ्रेम में करोगे तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगने लगेगा ma। अब देखो ये एंगल थीटा है, we had this angle as theta, we had this angle as theta here. Okay, so components तोड़ते हैं इसका। कैसे करोगे? How to resolve the component? क्योंकि थीटा में हमें ये मिला है because it is moving in the positive x direction, I guess. ठीक है, कोई नहीं, क्या करेंगे? हाउ टू गेट दिस एंगल? Professor, could you repeat it? Could you repeat your question? Yeah, just resolve the components of normal reaction in horizontal and vertical direction. ओके, विल डू दिस वन थिंग, क्योंकि अगर इधर हम लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं नेगेटिव साइड में एक्सेलरेट करके प्रॉब्लम को डील कर। वेट, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे ना, आंसर सेम आएगा, इधर से भी सेम आएगा, बट इट विल कम नेगेटिव। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। राइट लाइक दिस। ऐसा था। नाउ एज्यूम कर लो कि बेड मेरा यहाँ पे था एज यूजुअल, जैसे पहले आपने लिया था, बट इन दिस केस नाउ इट इज एक्स, क्योंकि उसने दिया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम इजी बनाते हैं। सो विल हैव दिस इन द पॉजिटिव साइड, तो इधर जाएगा ये, इस पे इधर क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन ma mg, ये एंगल थीटा फॉर्म करा, थोड़ा इजी होगा कंपोनेंट रिजॉल्व करना। नाउ सी, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से क्या हो जाएगा? थीटा। सो इफ आई रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हियर, दिस इज n cos थीटा, और ये कितना हो गया? n sin थीटा। एक बार फिर से वर्कआउट करते हैं, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। ओके, सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट वी कैन से, इक्विलिब्रियम के लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि n sin थीटा ma के बराबर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, and n cos theta will be equal to what? mg।
Sorry. Now divide them. Sorry. So dividing equation 1 by equation number 2. So if you divide them, what we'll be having? N sin theta by n cos theta. M and M will get cancelled. N और N cancel हो गया यहाँ से. So we had tan theta is equal to what? A by G. इसको इधर ही रखते हैं. देखो बहुत इजी हो गया. अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में एक्सप्रेट करूँगा ना तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा इजी हो जाएगा. अब देखिए, we are having here y is equal to k of x स्क्वायर. मुझे यही x पूछा गया है. मुझे पता है डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप मिलता है एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है. इसको डिफरेंशिएट कर दो. सो dy by dx, k कांस्टेंट है, dx स्क्वायर by dx. सो इफ आई सॉल्व इट फर्दर हमें मिलेगा dy by dx. सो दैट implies dy by dx. और as you know कि डिफरेंशिएट करने के बाद we get the slope. So ये भी slope ही है हमारा. So comparing equation number 3 and equation number 4. So and equation number 4. So if I compare them, a by g 2kx. आपसे x पूछा गया है. So x will be equal to a by 2kg. Am I clear? समझ में आया कैलकुलेशन सभी को? देखो हमें पता है डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप मिलता है एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा. सो यहाँ से मुझे जो tan थीटा मिला उसको dy by dx के साथ कंपेयर कर दिया. रेस्ट इज द कैलकुलेशंस. हमें ये x पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द बेड फ्रॉम y एक्सिस मतलब x. ऐसा कैलकुलेशन क्लियर है? ओके. शुभम, अंकिता क्लियर है कैलकुलेशन से? हाँ सर. I'll hold for a minute. एक बार देखो जरा अच्छे से कैलकुलेशन को अच्छे से देखो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सर सर हाँ बेटा. सर क्वेश्चन में बोला कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव हो रहा है ना. तो अगर बीट लोएस्ट पोजीशन पे है तो वो तभी स्लाइड होगा अगर वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस मूव होगा. नहीं, जब ये इधर जाएगा और अगर आप इसके फ्रेम में बैठ गए हो तो इसके फ्रेम में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए इस बेड के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम एक्सेलरेशन. आप देखना कार में, कार अगर हॉरिजॉन्टल है ना और कार जैसे आगे बढ़ता है यूज्ड टू मूव बैकवर्ड. तो जैसे ये पीछे जाना चालू करेगा ना, स्टार्ट क्लाइंबिंग हियर.
because of this pseudo force. So अगर आप ये ऑब्जर्वर से देखोगे तो this observer is on non-inertial frame and as the observer is on non-inertial frame, so therefore इसके रिस्पेक्ट पे बेड में एक pseudo force पीछे की तरफ लगेगा and because of that pseudo force bed will start rising upward. समझ में आया निशा? Yes. ओके गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सबको क्लियर है ना? Yes. ओके आगे बढ़ते हैं. आंसर इज बी हियर. नेक्स्ट. ओह ये जेई एडवांस प्रॉब्लम. The pulley and string shown in the figure are smooth and negligible masses. For the system to remain equilibrium, the angle theta is. Okay, मैं ये एडवांस का दूसरा था. सो मैं अरेंजमेंट कैसे करके दिया है. ऐसा है. We had a pulley here. इसके साथ हमने यहाँ पे एक मास अटैच कर दिया है. This angle is theta. M kg. रूट 2 m kg. so आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर इक्विलिब्रियम. कैसे करोगे? यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, इधर भी T लगेगा, इधर भी mg लगेगा. सो इक्विलिब्रियम के लिए लॉजिकल बात है दैट टेंशन विल बी इक्वल टू mg एंड हियर आल्सो द टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? mg. अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले ब्लॉक का इफ यू प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे लगेगा रूट 2 mg. mg एक्ट हो गया और इस पे इधर भी mg एक्ट हो रहा है. so, अगर हम इसको बैलेंस कर दे, एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है वर्टिकल से दोनों साइड में. so, इस पे ऊपर क्या लगेगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा और sin थीटा विल बैलेंस ईच अदर. सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट होगा यहाँ पे, दिस विल बी 2mg cos थीटा. सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अगर आप देखोगे, सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट 2mg cos थीटा is root 2 mg. This m and g will get cancelled, so cos theta हो जाएगा 1 by root 2. So therefore theta we had here is on 45 degrees. Clear है? शुभम आंसर आया था इस प्रॉब्लम का बेटा? Yes. ओके नाइस है. इसी तरह क्लियर सबको? Yes. ओके चलो we'll move ahead. Question number 70. Two blocks of mass capital M and small m are connected by a string passing over the pulley as shown in figure. The downward acceleration of small m kg is. So small m kg का downward acceleration पूछ रहा है. इस पर्टिकुलर केस में we have a table here. इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया.
इसका मास है कैपिटल M kg का, तो इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो ये भी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाएगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। सो अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे, नीचे इस पर लगा mg, तो लग गया टेंस। सो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, सो आई विल बी हैविंग P is equal to ma. So if we place here P की जगह पे, so small m plus capital M into a mg. So acceleration कितना होगा, mg by capital M plus small m. आंसर था शुभम, इसी था। Yes, sir. अंकिता एंड दिया समझ गए बेटा दोनों की कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, आगे बढ़। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 80। A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against the wall. The coefficient of friction ये दिया हुआ है, तो आपसे वेट पूछा गया है, देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे हमारा वर्टिकल वॉल है और इसमें ब्लॉक को होल्ड करने के लिए आपको कंपलसरी 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। इससे कम फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक साइड होकर नीचे गिर जाएगा। इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। आपसे पूछा गया है वेट पूछ रहा है कि मास पूछ रहा है, वेट ऑफ द ब्लॉक। इस पे के नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और ये जो mg लगा वही आपका वेट होगा। सो फॉर बैलेंसिंग दिस, वेट हो गया, सो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब आप देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 10। सो वेट कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, सो दैट इंप्लाइज वेट विल बी ऑफ 2 न्यूटन। Am I clear? आ गया था आंसर सभी का? Yes. ओके, ऐसा आया था आंसर आपको इस प्रॉब्लम का? यस। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं, करिए इसको। अच्छा, ये जेई मेंस ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन, शायद लास्ट ईयर का ही आया वो सवाल। करो, मैं एक मिनट होल्ड करता हूँ इसको। चलो देखते हैं इसको, एंगल्स वगैरह सब दिया है हमें। से आपने फोर्स लगाया,
एंगल 60 डिग्री दिया है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है म्यू 1/2√3. So क्या होगा if you resolve the component f of cos 60 degree, f of sin 60 degree प्लस इसका mg नीचे एक्ट होगा, मास दिया √3 kg इसका, एंड प्लस इस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा एंड हियर देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इस पे लगाएगा. सो पहले अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, so what will be the condition for vertical direction? Normal reaction is mg plus f of sin 60 degree. So इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा √3 into g plus f of sin 60 degree. क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे f sin 60 भी लग रहा है और mg भी लग रहा है. ना अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, सो हमें क्या मिल रहा है, f of cos 60 degree is equal to friction cos 60 mu into normal reaction 1/√3g plus sin 60 is √3/2. मल्टीप्लाई करेंगे, cos 60 is 1/2, f/2 this will get cancelled, g/2 √3 cancel हो गया, f/4 f/2 minus f/4 f/4 हो जाएगा. So implies f will be equal to what? 20 Newton. था आंसर सभी का ये? Naisa, do you had the answer for this problem? Yes. Okay. जैसे आपको समझ अंकिता समझा बेटा आपको ये प्रॉब्लम? Sure. Okay. Subham, have you got the answer for this question? Yes. ठीक है, पर देखो फिर आगे बढ़ो. चलो आगे बढ़ते. Question number 20. A block B is pushed momentarily along the horizontal surface with initial velocity of v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface. ये तो बहुत इजी है. So, इस क्वेश्चन में आपने ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था ये, तो क्या लगेगा इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हमें यहाँ से क्लियर है कि दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? mg. सो फ्रिक्शन हो जाएगा mu into mg and this is mass into acceleration. मास कैंसिल हो गया, which is a retardation of course, और ये कांस्टेंट है बिकॉज म्यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है. सो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at, फाइनली 0 होगा. Is it clear? Everyone? Yeah. Okay. दिया समझ में आया बेटा कैलकुलेशन ये?
Shall I move forward then? आगे बढ़ो. चलो आगे बढ़ो. आपसे वर्क डन पूछा गया है 1 मीटर और 5 मीटर के बीच में. क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे ना इसका. Yes. What will be area here? 2 into, so 2 minus 1 into 10. देखो और लिख कर देता हूँ इधर ही. एरिया कितना होगा? 2 minus 1 into 10 which is 10 मीटर here. 1 5 15 हो गया इधर प्लस. इधर कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पे. सो प्लस 15 minus 5 here. सो प्लस 10 बच गया टोटल. यहाँ पे हाफ into 5. सो प्लस 10 प्लस 5 15 जूल होगा आंसर इसका. ठीक है, बस एरिया निकालना है. सो गेट द एरिया हियर. 2 minus 1 is 1 into 10 which is 10 मीटर. 3 minus 2 is 1 into 5 मीटर. सो 10 plus 5 15 हो गया. यहाँ का एरिया नेगेटिव होगा -5. तो 15 minus 5 is again 10. फिर यहाँ का एरिया निकालो. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू 1 इंटू 10 5. सो 15 minus 5 plus 5. सो दिस इज 15 जूल अल्टीमेट. हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है. Am I clear? समझ में आ गया सुबह? Yes. ओके आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 22. A bullet of mass 10 gram is fired horizontally with a velocity of 1000 meter per second from a rifle situated at a height 5 meter above the ground, 50 meter above the ground. So mass आपको दिया 10 ग्राम और आप फायर कर रहे हो इसको. So ग्राउंड से इसका डिस्टेंस मालूम है हमें. So we have the distance of, यहाँ से बुलेट फायर हो रहा बाय द वे, और ये फायर हुआ है 1000 मीटर पर सेकंड से, और बुलेट का मास दिया है 50 मीटर. If the bullet reaches the ground with a velocity of 500 meter per second, the work done against air resistance in the trajectory of the bullet is. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. वर्क डन आपसे पूछ रहा है. जब ये ग्राउंड को रीच किया तो यहाँ पहुंच गया. सो लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम. सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब यहाँ पे दो वर्क डन करेगा. एक तो mg भी वर्क डन करेगा और प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस भी करेगा. आर लिख देता हूँ मैं. काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अच्छा, मास 10 ग्राम दिया है. सो 10 डिवाइडेड बाय 1000. सो दिस विल बी 0.01 kg. तो निकालेंगे अभी. वर्क डन ड्यू टू mg इस पे पॉजिटिव वर्क डन करेगा बाय द वे, क्योंकि इस केस में वर्टिकली इतना नीचे आ रहा है 50 मीटर. सो 0.01 mgh हाफ इंटू m इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना था 500 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू 1000 का स्क्वायर. सो मास दिया है 0.01 इंटू 10 इंटू हाइट नीचे आ रहा है. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव. ये रेजिस्टेंस हाफ इंटू m को कॉमन ले लो. दिस इज 500 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1000 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. फाइव प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस 0.01 ये हो जाएगा माइनस में 1500 इंटू 500.
7 2 14 5 750 से हो जाएगा 5 प्लस 750 जूल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, चेक करो एक बार कैलकुलेशन इसका। mgh मास 0.0 इंटू 10 इंटू 50 से हो जाएगा 5 वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस हाफ mv स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया क्वेश्चन में? 500 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 1000। $500 माइनस 30 हो जाए। अच्छा ये 5 रह ही गया ना, 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये हो गया 0 25 तो 3750 right? So if we solve it, we had 3750. So work done due to resistance कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट इतना ही होगा 50 work done due to kinetic minus में है -5. So what is work done due to resistance? Minus of 3755 joules is the answer. ऑप्शन में क्लोजेस्ट लेना पड़ेगा है ना, 3755 is the answer, B option. Am I clear? आयशा आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? Yes. Okay. Sir, I think 3755 got wrong. Yeah, option is answer is wrong, so we'll get a bonus marks for this. So it is 3750, but it should be 3755. Got it? Calculation? Yes. अंकिता समझ में आ गया बेटा कैसे कुछ केस को सिंपल सा कॉन्सेप्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज व्हाट यू हैव। हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सबको समझ में है? इशिता एंड दिया, बोथ ऑफ यू क्लियर? Yes. Yes sir. We'll do one more. Question number 23. A mass m kg, capital M kg, suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction is. Okay. So question में दिया है कि यहाँ से स्ट्रिंग है, like this, और यहाँ से आपने एक ब्लॉक अटैच किया है और इसको आपने मूव करा दिया such that now it is making an angle of 45 degree. कितना फोर्स आपको चाहिए रहेगा? लेंथ आप L मान लीजिए और बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी गेन नहीं हुआ, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोसेस। 45 डिग्री, तो दो वर्क डन करने वाला है यहाँ पे। तो पहले तो इस पे नीचे mg लगेगा, mg विल डू नेगेटिव वर्क डन एंड फोर्स विल डू पॉजिटिव वर्क डन। अब देखो ये L है 45 डिग्री है, सो ये हो जाएगा L cos 45, तो ये हो जाएगा L माइनस ऑफ L cos 45 और ये हो जाएगा L sin 45 डिग्री। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. Now since I am saying here that the process is quadratic, मतलब बहुत धीरे-धीरे आप करा रहे हैं, so अगर हम बहुत धीरे-धीरे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब kinetic energy final will be equal to kinetic energy initial. So mg इस पे नेगेटिव वर्क डन करेगा, माइनस ऑफ कैपिटल M लिखा है, so minus of m into g
L bracket 1 minus of cos 45 degree plus work done due to fix F applied force. So ये force आगे लग रहा है और displacement भी आगे हो रहा है sin 45 का. So F into L is equal to 0. So FL sin 45 is what? 1 by root 2 mg into L, 1 minus of 1 by root 2. This L and L will get cancelled. So F by root 2, root 2 minus of 1 by root 2, this root 2 and root 2 will get cancelled. This is the right answer. D option. Correct. Am I clear properly? ऐसा आंसर आया था बेटा इस प्रॉब्लम का? हाँ सर। ओके गुड. ठीक, बाकी सबको क्लियर हो गया कैलकुलेशंस पूरा अच्छे से? Yes. Okay, fine. So we have discussed till 23. आज यहीं तक रोकते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं. 23 तक किया हमने. एक लेक्चर और मुझे लगेगा, मे बी संडे का लेक्चर. So we'll complete this test and then from next Tuesday, Wednesday, we'll be starting with a very important topic. और अब हम लोग मूव करेंगे from linear motion to circular motion and then we'll start the first chapter. हम लोग start करेंगे which is circular motion. Is it clear, everyone? Yes. ठीक है बेटा, बस थोड़ा जल्दी रखते हैं. Close for today. Bye. Bye. Bye.